हर व्यस्त तो आज आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं एनओएस सॉफ्ट टीएमए असाइनमेंट 2023-24 मार्च अप्रिशिएशन का। तो और आज का सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश 202। और हम लोग को जो भी एक्सपीरियंस टीचर है वो आप लोगों के लिए इंडिया का जो भी बेस्ट नोट है वो यहाँ पे बना के लेके आया है। और यहाँ पे आप लोगों को 6 क्वेश्चंस का ही आंसर मिल जाएगा। और आप लोगों का जो भी टीएमए सबमिट का डेट है वो है 31 जनवरी 2024। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फिर एनओएस टीएमएस सेक्शन में जाके अपलोड कर दीजिए। और तो आप लोग चाहने से वीडियो से स्क्रीनशॉट करके भी ले सकते हैं, या फिर आप लोगों को यदि पीडीएफ चाहिए तो फिर पीडीएफ हम लोगों का जो भी वेबसाइट है skus.co.in यहाँ पे जाके भी आप लोग ले सकते हैं। या फिर हम लोग का शिक्षा केंद्र उन्नत सोसाइटी यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे प्ले लिस्ट में हम लोग पार्ट बाई पार्ट वीडियो डाल देंगे। वीडियो का नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग चांस से ले सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट का हम लोग जो भी सॉल्व किए हुए टीएमए असाइनमेंट है वो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो ताकि आप लोगों का जो Hello भी everyone, फ्रेंड सर्कल welcome है back सभी to को Shiksha ये नोट Kendra Unnayan मिल जाए। Society, Siliguri, West Bengal. So today we will be solving tutor marked assignment English 202 paper, and it consists of marks 20. Number 1. Answer any one of the following question in about 40 to 60 words. आप लोगों को number A and number B मिलेगा यहाँ पे, but as you can see the number B is done, you have to write only one of that. Okay, आप लोगों को दो में से एक ही करना है, सिर्फ only one, any one. B. Describe APJ Abdul Kalam's third vision for India and how as a nation we can be a global strength to reckon with. आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अब्दुल कलाम का थर्ड विज़न इंडिया के लिए क्या था वो लिखना है। Answer. APJ Abdul Kalam's third vision for India was that India must stand up to the world, because unless us stand up to the world, no one will respect us. We must be strong not only as a military power but also as an economic power, because people tend to respect those who are strong. He is astonished to see that despite many amazing success stories and being the world's second largest producer of wheat, rice and being the largest producer of milk, number one is remote sensing satellite, the Indian citizen lacked courage to acknowledge its nation's achievement. Kalam then targeted the Indian media, who is obsessed only with bad news, failures and disaster. The biggest drawback of our media is its failure to give recognitions to Indian achievement and success stories. He then questioned about craze and obsession of Indians with foreign TVs, foreign shirts and foreign technology. This craze for foreign stuff has affected self-reliance of our nation. What APJ Abdul Kalam is saying, if we do not stand for ourselves, then हम लोग अगर अपने आप के लिए स्टैंड नहीं कर सकते तो हम लोगों को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आप लोगों को रेस्पेक्ट चाहिए तो आप अपने लिए पहले खड़ा होना सीखिए, तभी आप लोगों को रेस्पेक्ट मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस एंड इंस्टेंट ऑफ ऑल दिस थिंग, जहाँ पे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे राइस होता है, व्हीट होता है, मिल्क एकदम ही ज़्यादा नंबर पे होता है, फिर भी वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि हम लोग उसे इम्पोर्टेंस देकर रिकॉग्निशंस के ऊपर नहीं रखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम लोगों के पास कोई भी ऐसा टैलेंट हो या फिर कोई भी कुछ हो, इन ऑर्डर टू गेट रेस्पेक्ट वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ एंड वी शुड take a stand for ourselves, and we should first recognize our thing, then only other will respect us. अगर हम लोग अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी हम लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि जब आप अपने कंट्री को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी देश के इंसान भी हमारे देश को रेस्पेक्ट नहीं करेगा। Okay. Number 2. Answer any one of the following question in about 40 to 60 words. A. Recycling rubbish not only helps save money, it also helps the environment. In view of this, mention 4 advantages of recycling to justify your answer. हम लोगों को पता है कोई भी चीज़ अगर हम रिसाइकल करेंगे तो उससे मनी सेव होता है, पर एट द सेम टाइम उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो वो क्या है हम लोग पढ़ेंगे।
Recycling rubbish not only helps save money, it also helps the environment. We lessens the pollutions that is created by burning rubbish, and we save valuable resources. Western countries waste a great deal of earth resources. Four advantages of recycling are as follows. Number one is recycling paper and wood save trees and forests. Yes, you can plant new tree, but you cannot replace virgin rainforest or ancient woodland once they are lost. Recycling plastic means creating less new plastic, which is definitely a good thing, especially as it's usually made from fossil fuel hydrocarbons. Recycling metals means there's less need for risky, expensive and damaging mining and extraction of new metal ores. Recycling glass reduce the need to use new raw materials like sand. It sounds hard to believe, but supplies of some type of sand are starting to get low around the world. So how we can recycle the thing? Advantages क्या क्या है? By recycling the paper and wood, इससे tree save होता है और हम लोग नया tree को भी लगा सकते हैं. रिसाइकलिंग प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से कोई नया चीज़ बना सकते हैं. रिसाइकलिंग मेटल वो रिस्की होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, पर उसे भी रिसाइकल करके हम कुछ अच्छा नया बना सकते हैं. रिसाइकलिंग ग्लास इट यूज़ अ न्यू रॉ मटेरियल लाइक सैंड. इट sounds hard to believe, but suppliers of some types of sand are starting to get low around the world. In this way we can recycle the things. Okay. Number 3. Answer any one of the following question in about 40 to 60 words. Number A. How did Kezia being to see her father as a human being who needed her sympathy more than the love of a child to a parents? Answer. When Kezia had a horrible nightmare, she was awakened to see her father her bedside. He carried her to his room and tucked her into his bed. He also asked her to rub her feet against his foot to keep them warm. Her father was very tired and fell asleep before Kezia did. This was when Kezia realized that he too was a human. Even though he looked like a great giant, had no one to look after him, he also needed some sympathy and love. Finally, Kezia realized that her father had a huge heart and loved her very much and worked hard for her. 4. Answer any one of the following question in about 100 to 150 words. आप लोगों को ये words देखकर ज़्यादा लिखना है या फिर कम लिखना है, आप ये decide करके लिखना है, ठीक है? A. People change over the year. They became cold-hearted and indifferent. With the passage of time, there is loss of identity from innocence and genuineness to untrustworthiness and an uncaring attitude. Comment on the central idea of the poem Once Upon a Time, penned by Gabriel Okara. आप लोगों को ये पैसेज, ये पीपल से लेके पोएम तक का ये एक पैराग्राफ है, ये एक पोएम से लिया हुआ है. पोएम का नाम है वंस अपॉन अ टाइम बाय गैब्रियल ओकारा. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर एंड द मीनिंग ऑफ इट एंड द आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ वंस अपॉन अ टाइम. क्या है सेंट्रल आइडिया, उसके बारे में लिखना है आप लोगों को, ठीक है? The central idea of the poem Once Upon a Time by Gabriel Okara explored the transformation that people often undergo as they grow older. The poem talks about how as time passes, individuals can become emotionally distant and indifferent, losing the innocence and sincerity they once opposed. डिटेल्ड आंसर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग. द पोएम क्या हाईलाइट करता है? पोएम इट हाईलाइट हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस एंड द नीड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ कैन लीड टू अ चेंज इन बिहेवियर एंड एटीट्यूड. The loss of identity from being warm-hearted and genuine to becoming untrustworthy and uncaring is a lament for the loss of authenticity and emotional connection that comes with age. In simpler terms, the poem portrays how people can become less kind and open as they get older, and it reflects on the societal factor that contribute to this change. More about the poem Once Upon a Time is a poem written by Nigerian poet Gabriel Okara. The poem explores the
complexities of human experiences and the loss of innocence as one grow older. It shows the simplicity of a child perspective with the artificiality and hypro, hypocrisis, hypocrisy, hypocrisy, oh, hypocrisy of the adult world. The poem reflects on the grand transfer hypocrisy of the adult world. The poem reflects on the gradual transformation from genuine emotional to societal marks and the need for self-discovery to regain a sense of authenticity. Number 5. Answer any one of the following question in about 100 to 150 words again. Okay. The shoe shine is a touching tale that drives home the message that dignity of labor must be respected. No work is small or unworthy. It is hard work and dedication that gives one respect and credibility in life. Describe the relationship between Sasivrata and Shovan Lal in your own words. ये जो पैराग्राफ मैंने अभी पढ़ा, क्वेश्चन जो पढ़ा है मैंने, वो लिया हुआ है सुशाइन स्टोरी से. ये एक क्या है, एकदम टचिंग टेल्स है. ओके, एंड इट शोज़ दैट दिस स्टोरी शोज़ द डिग्निटी ऑफ द लेबर मस्ट बी रेस्पेक्टेड. हम लोगों को कैसे किसी का काम को रेस्पेक्ट करना है, छोटा हो या बड़ा हो, वी मस्ट डू इट विद अ फुल डेडिकेशन. ठीक है, तो हम लोग उसे कैसे हम लोग उसे रेस्पेक्ट कर सकते हैं ये बताना है. इस पोएम में आप लोगों को कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट अभी इसी क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन ससीव्रता एंड सोवन लाल को लिखना है अपने ही जुबान पे. ठीक है. आंसर ससीव्रता, अब पहले बोलना पड़ेगा कि ससीव्रता कौन है और शोभन लाल कौन है. ओके. Sasivrata is the narrator of the story Sushine, and Sovan Lal was a very poor boy living in very bad condition. Sasivrata कौन था, narrator था story का, और Sovan Lal is a very poor boy living in a very bad condition. He belongs to a very poor family, so he had to earn money by himself for his survival. He earns money by polishing the shoe of others. When he was doing his work, the narrator came to him and asked for a shoe polish. Narrator addressed that positive attitude and the ability to think creatively and step towards achieving success. It emphasizes that no work is small. Describing work of Sovan Lal and dignity of labor must be respected. Those who earn their living through hard work should be honored. It also draws our attention towards the fact that everyone is intelligent if given the opportunity can rise in life. यहाँ पे ससीव्रता एक नैरेटर है और सुशाइन स्टोरी में शोभन लाल कौन है, अ पुअर बॉय जो दूसरों की शू पॉलिश करते थे. ओके, सो नैरेटर केम टू हिम एंड आस्क्ड फॉर अ शू पॉलिश. सो नैरेटर ने क्या किया, उस शू पॉलिश को एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया. ठीक है, कोई बड़ा आदमी होता है और जो छोटा काम करता है उसे दबा के बात जो करता है ना कोई दूसरा लोग, पर नैरेटर ने ऐसा नहीं किया है. सो दिस पोएम और स्टोरी, दिस स्टोरी शोज अस दैट कोई भी छोटा काम करे, अगर आप लोग बड़ा काम कर रहे हैं तो छोटा लोग जो छोटा काम करता है उसे डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ देम. Number 6. Prepare any one project out of the following in about 500 words. यहाँ पे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रेडी करना है 500 मार्क्स वर्ड्स के अंदर. अभी आप लोगों ने किया 40 to 60 वर्ड्स में कंप्लीट किया आंसर, और फिर 100 to 150. नाउ 500 वर्ड्स के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. प्रोजेक्ट का क्वेश्चन क्या है, रीडिंग इज एसेंशियल. It serves as the basic building blocks for learning. It is an important life skill as it opens door for global citizens. Reading of varieties of texts like essay, biographies or journals is not only informative and strengthens skills of concentration and reasoning, but it also improves language and thereby help in confident building. Reading बहुत ही essential होता है, किताब पढ़ना बहुत ही essential होता है. ठीक है, तो उसी के बारे में आप लोगों को एक ये प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, उसका इम्पोर्टेंस लगा के. आप लोगों को
बुक्स चाहे कोई भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, ऐसे हो, बायोग्राफीज हो, जर्नल्स हो, अगर आप लोग वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, स्किल्स बढ़ेगा, and it also improves your language, and thereby it will also develop your confident. So आप लोगों को ये पैराग्राफ लेके एक प्रोजेक्ट बना के 500 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। नीचे भी है, कीपिंग इन दिस व्यू एडवांटेजेस, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट एंड द मल्टीपल बेनिफिट ऑफ acquiring good reading skills for a project paper to be read on the occasion of World Book Day, the theme for which is read so you never feel alone. थीम क्या है, आप लोग ऐसे पढ़िए कि आप लोगों को अकेला महसूस ना हो। हम लोग किताब कब पढ़ते हैं, जब कोई भी नहीं हो या फिर एकदम अच्छे से पीसफुल जगह पे पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को किताब पढ़ते समय ऐसा फील मत हो कि आप लोग अकेले हैं, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस, फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लिखिए। रीडिंग इज़ एसेंशियल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। Reading is essential and serves as a basic building blocks for learning, regardless of the school subject, be it language, arts, or even maths. In daily life, the need to read things such as street signs or prescriptions proven reading is also an important life skill. अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखने के लिए बोला है, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट एंड द मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ एक्वायरिंग गुड रीडिंग स्किल्स। आप लोगों को किताब पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलता है, उस पर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बनाना है। देन यू कैन राइट अ सब हेडिंग लाइक दिस, बेनिफिट ऑफ एक्वायरिंग गुड रीडिंग स्किल्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, क्या क्या होता है बेनिफिट, रीडिंग स्ट्रेंथ्स द ब्रेन एंड इम्प्रूव्स मेमोरी। रीडिंग ऑल्सो स्ट्रेंथन ब्रेन कनेक्शंस एंड बिल्ड्स न्यू वंस। आप लोगों को ब्रेन का क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। और फिर इट हेल्प्स टू add a new ideas and it makes a strengthen of brain connections and build a new one. Number 2, reading improves concentration. Since reading is an activity that required focus, it is one that when done regularly help children develop the ability to sit still and quietly for a longer period of time. रीडिंग अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्या इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। नंबर 3, रीडिंग इम्प्रूव्स अ चाइल्ड वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल्स। द मोर चिल्ड्रन रीड, द मोर न्यू वर्ड्स दे लर्न. As they observe these new words, they are able to define them based on the context of the material. Children can also learn about sentence structure through reading, which can help improve their writing skills. अगर कोई रीडिंग करेगा, बुक रीडिंग करेगा, तो उसका क्या होगा, लैंग्वेज और वोकैबुलरी डेवलप होगा।